A very good evening and welcome to everyone who is present here, all the participants who have been joining us week after week for the last 48, 49 weeks. Ladies and gentlemen and everyone, I'm very happy to share with you that this is the 49th leadership conversation that we are having. And this conversation is going to be extremely different. It's going to be very exciting and it's going to be new. As much as we are excited, I'm sure all the participants are also excited to understand more about the Kung Fu nuns. Please join me in welcoming the two Kung Fu nuns who are representing the Kung Fu nuns of Drukpa order. From the bottom of my heart, I welcome both the nuns, Jigme Rupa Lhamo&Jigme Yangchen Ghamo. Most welcome to this webinar, both of you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Wonderful. It's such a excitement that we have today. Usually we don't discuss these topics in our mainstream education that we pursue in terms of learning, in terms of practices, in terms of what we study and what we deliver. Such topics are not part of our main discussion. But we thought this is a welcome deviation and we should learn from all walks of life. In continuation with that spirit, today we have requested the Kung Fu nuns to join us and share their practices and what kind of leadership lessons that we can learn from them. So ladies and gentlemen, without much ado, I will now begin with a brief introduction of the Kung Fu nuns. Allow me to share the screen. Yes, today the two nuns are going to talk about the life of a Kung Fu nun and how it's an inspiration to Himalayans. Once again, thank you very much for joining. And this is a talk which will last for about an hour. And the first 20-25 minutes will be an opening remarks and kind of a talk delivered by the two nuns, Jigme Rupa Lhamo&Jigme Yangchen Ghamo, followed by a moderated questions and answer session. It will be led by Prof. Prasad and myself, and that will be lasting for about 40 minutes or so. These are the extremely strong nuns who are with us this evening. I'm quite excited to actually present them. Before that, there is a brief about the Kung Fu nuns and also especially both of them individually. A group of young nuns from the Drupka lineage of Buddhism have adopted Kung Fu as a way to build strength and confidence while championing gender equality in their home region of Western Himalayas. Breaking centuries-old traditions like a ban on exercise for nuns, it's been there earlier, and a social order that generally favored men in leadership roles, these nuns have become an example of kindness in its fiercest form, empowering themselves in order to serve and empower others. They face several challenges. Their work has been critical in a region that has become known for geopolitical strife and experienced a vast array of threats, both physical, like human trafficking and border violence, and soft power, including attempts at forced religious conversions and cultural genocide as tools to expand influence on behalf of extremist actors in the West and communists in the East. Despite this unstable environment, these young women have become champions of equality and environmentalism and are known for their epic acts of service to promote their causes. Embarking on journeys that take them thousands of miles through India and the Himalayas, they travel to remote villages to talk to communities about the benefits of environmental conservation, women's empowerment, and they also speak out against human trafficking. Their service to society is quite laudable. The nuns serve as first responders to remote villages and minority communities after disasters. They also run free health clinics, they rescue injured animals, and they have manually removed thousands of pounds of plastic litter from across the Himalayas and India. What's more, they serve as role models to an entire generation of women that now feel empowered to protect themselves and make a change in their communities while working towards a peaceful, tolerant Himalayan existence. Today, there are about 800 Drukpa nuns with a long waiting list of women and girls who hope one day to join their ranks. Looks like it is the most sought after. They have become critical pieces in the humanitarian puzzle in the Himalayas, not only promoting gender equality, but also using their work to help communities value the rich array of microcultures throughout the Himalayas and protect minorities
from coercive and often violent outsiders looking to establish control. Now, the specific introduction of the two women nuns who are present here, Jigme Rupa Lhamo. She hails from Lahaul in Himachal Pradesh, India. She is the only daughter and is loved by everyone. Now she works to make sure every girl feels valued. She is dedicated to Kung Fu because it helps her keep calm and meditate. She hopes girls around the world feel safe and have equal opportunities. Welcome, Jigme Rupa Lhamo. Welcome to you. Thank you. Now, she's also joined by Jigme Yangchen Ghamo. She was only 10 years when she became a nun. Growing up, she used to feel shy to have a conversation, and now she's featured in the prestigious CNN's Great Big Story. She is a born leader and believes in women becoming their own heroes. Welcome, Jigme Yangchen Ghamo. Hello. Good to see you. Thank you. Yeah, you know someone who is there with them. I met Kung Fu nuns a couple of years back in Gurgaon. This is my picture, which I always saved. And it was a happy moment to spend that time with Kung Fu nuns in Gurgaon a couple of years back. These are some of the pictures. I'm sure you know some of them. Yes. Now, upon the request, before they start their opening remarks, upon their request, I'm going to share a video. And after this video, we will have the opening remarks given by both the nuns. So please allow me to present this video on their behalf. Lots of people think that as a Buddhist nun is just do meditation, but we believe that helping others is our religious, and we think that sitting in one place doing meditation is not that much affected in these days. Our order, Rupa order, especially when it comes to nunnery, this is an example for the rest of the female practitioner, and particularly, and for the rest of the women in general. So when it comes to the male practitioner, traditionally being back from Tibet and Himalayas, the monks always had position, people look up to them. But when it comes to the nunnery and female practitioner, it's not a respected one. And then nuns also, they don't do much. In our case, it's a golden opportunity. We can do whatever we would like to. There is no such restrictions. For example, regarding the spiritual dances, nuns never did it before. Even in Tibet and all this, never. Monks are always there. They always do perform all these, dances. But we are very lucky and very fortunate to have these chances because our Guru has given us fully sort of chance. So here in this nunnery, we do lead from top to bottom, from the puja, from the dances, from the leading, from office, everything runs by nuns. Presently, I think we are around 500 nuns here in this nunnery. The youngest one now is 9 years old. Older, there is no such age. It depends on your renunciation and your motivation, why you would like to become nuns. I have telling that Kung Fu is not for fighting, no. Usually many people think like that, but for me, learning Kung Fu is very important to our own inner meditations.
Kung Fu is, I would say, it's an art. It's an art, which is not only designed for men, and it really gives you immense sort of confidence, mentally, physically, fitness. That's why Kung Fu is compulsory to learn every single nun. We have to take our own safety, like self-defense, because we have doing lots of padayatra, cycle yatra. We go out of our naniri very far. Our Buddhist philosophy of motivation and devotion works with compassion and actions. When we don't have this Kung Fu, that time, whatever difficulty things come, we get tired and we give up very quickly. But since we learn Kung Fu, we are mentally and physically getting strong. So we thought that since we are a nun and doing these things, why don't we share with other young girls, because young girls are our future. If we teach them how to defend ourselves, how to emotionally and physically strong, it's very important. There are many people who don't like it, like doing Kung Fu by nuns, It doesn't go with their mind, They will definitely disagree with it. And even the dances, when it comes to spirituality, many great masters, they are sort of shocked, They said, wow, we have never heard the female practitioner or the nuns performing such mask dances. We don't really like it, but then, we have never stopped it, because we have given the great opportunity by our master. So, there's no restriction. So we do it. By doing it, the stereotypes or the mindset seems to be sort of, how do you say, dispelling, I would say. Yeah. So we are trying our best. Yeah. If we focus on criticism, then we cannot walk outside. So that's why I myself believe that we should never listen to criticize. We as a nun really want to help others, even in a spiritual way or even in a social way, Until our breath is here, we would like to serve this earth, we would like to help globally. So one day I hope that there will be a same level of man and woman. So there are no fear, no less confidence, no emotional torture. For me, I am very proud to be a Rupa Kung Fu nun. The girls can walk the talk if they get opportunity. That was a fantastic account of what's happening with Kung Fu nuns, and it gives us a variety of takeaways. But most importantly, the three is an overriding purpose of becoming self-sufficient and strong, and at the same time empowering others. That's the first point and first takeaway. And the second one is about pushing oneself to a rigorous training, thereby strengthening self. And that discipline and consistency is going to help address some kind of adversities, if any. I think that's a very, very important. And the third one is the finesse with which they're able to wave a very sharp blade or a knife vis-a-vis the comfort and the finesse with which they're waving a fan. Looks like absolutely there's no difference. So that's quite mesmerizing and quite amusing for me from this side of the screen. So thank you very much, Jigme Rupa and Jigme Yangchen. I'm very, very happy to host you. And what I suggest now is a lot of doubts and initial queries would have been cleared by this video, and other things you will be able to speak now in your opening remarks. And then we will start the Q&A, which is going to be more interactive, and I'm sure it'll be very, very interesting for the entire set of audiences that we have with us. They've joined from different countries. They've joined from various parts of the country within India as well. And we look forward to having an engaging
discussion with you. Over to you for your opening remarks, Jigme Rupa and Jigme Yangchen. Thank you very much. Thank you, sir. Hello everyone and namaste to all, and my name is Jigme Yangchen Ghamo and I'm from Ramecha village in Nepal, and we are the Buddhist nun of the Himalayan region, belongs to the Rupa lineage of the Buddhism, and Rupa lineage is 1,000 years old sect led by the Gyawan Rupa, and the Gyawan Rupa is famously known as in India with the great saint incarnation of Naropa. And for me, a journey of being a nun at when I was 10, it's not easy. जैसा मैं जब 10 साल में जब मैंने बोला था कि मेरा फैमिलीज़ को जब मैंने डिसाइड किया था एक नन बना, मैंने कभी भी नहीं सोचा था होता है ना इतना नन्स को इतना चीज़ कुछ करना पड़ेगा। मैंने जब डिसाइडेड करके मैं यहाँ पर 2010 में जब नन बन के आई थी, तब मुझे बहुत मुश्किल हुआ था क्योंकि मुझे यूज़ टू होना बहुत मुश्किल हुआ था। मैं एक छोटा फैमिली से थी, मतलब कि एक फ्यू मेंबर्स जो फैमिलीज़ में जो होता है फादर्स ग्रैंडफादर वो एक फैमिली से थी। पर जब मैं एक ननरी में एक आके हुआ तो मुझे 300 या 400 नन्स के साथ मिलना और यूज़ टू होना बहुत मुश्किल हुआ था। फिर उसके बाद जब अपना पर्सनल टीचर्स होता है, फिर अपना पढ़ाई के लिए होता है। जब हम फर्स्ट नर्सरी ज्वाइन करते हैं तो अपना फर्स्ट बिगिनिंग से नर्सरी से फिर हमारा जो पढ़ाई होता है राइटिंग्स रीडिंग्स वो वगैरह मेरे को फर्स्ट से अब मतलब कि सीखना पड़ता था, वो बहुत मुश्किल हुआ था मेरे को। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने कुंफू स्टार्ट किया था, मैंने मतलब कि कभी ये नहीं सोचा था नन्स के बाद कुंफू करना पड़ता है, मतलब कि होता है ना हर काम करना पड़ता है, पम्बिंग, लाइटनिंग, वायरिंग, मार्क्स डांस, म्यूज़िक क्लास, ये सब होगा मैंने नहीं सोचा था। क्योंकि जब हमारे दिमाग में एक नन्स बोल के दिमाग में होता है तो नन्स ऐसा होता है कि पीसफुल में एक क्वेश्चन में मेडिटेशन करके बैठे, ऐसा सोचा था। पर जब मैं यहाँ पर आके ये सब मेरे को जब सीखने मिला, तब मेरे को एक दूसरे से बहुत इनकरेज और बहुत पावर मिलता था। जैसा फर्स्ट आफ्टर द अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक के बाद हम लोगों ने फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने टेम्पल में स्टार्ट किया था। जब टेम्पल में हम लोगों ने फर्स्ट फ्यू ऑफ मोर देन 20 नन्स ने ड्रिल मशीन यूज़ किया था उन लोगों ने। फिर उन लोगों ने रॉक ब्रेक्स किया था, पिलर वगैरह क्या होता है ब्रेक करना था। तब मेरा मतलब कि हमारा बहुत सारा उनका मतलब कि नन्स और नहीं बहुत आर्मी उनका सोच में ये होता है कि जो एक काम जो दिखा जाता है वो दिमाग में ऐसा हो जाता है कि ये हम लोग ये लड़कियां करने वाला काम नहीं बोल के जैसा दिमाग में एक होता था। पर मेरे को ये बिलीव हुआ था कि उस टाइम हाँ ये मतलब कि होता है नन्स भी कर रहे हैं तो मुझे और उनसे होता है कि मैं भी कर पाऊँगी। क्योंकि ना जब मैं ये काम वगैरह देखती थी तो मेरे को ऐसा लगता था ये काम तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये हमारा बस की बात नहीं है। बहुत बात हुआ था। फिर तब मुझे ये चीज़ सबसे मेरे को बहुत अब मतलब कि एक दूसरे से पावर मिल के आगे बढ़ने का और इनकरेज करता है। फिर जैसे मैं उसके बाद हम 2015 अर्थक्वेक के बाद जब हम साइकिल यात्रा हम लोगों ने फर्स्ट साइकिल यात्रा करने का सोचा था। आई थिंक वो हमारा सेकेंड साइकिल यात्रा था। नेपाल से हम होते यहाँ से इंडिया तक गए थे। तब मतलब कि साइकिल यात्रा पे जब हम जा रहे थे तो हमारे को सबसे फर्स्ट में क्या वो हुआ कि हम जब अपना कंपैशन जो होता है नन्स के बाद जो हमारा एक मेडिटेशन होता है जो कंपैशन होता है जो हम एक्शन में करेगा तो वो ज़्यादा उनको मतलब कि मेरे को लगता है कि ये जल्दी मतलब कि उनको यूज़ होता है। मतलब कि जब हम एक जगह में बैठ के हम जब इन्वायरमेंट के लिए बात करेंगे, ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए बात करेंगे तो बहुत मतलब कि आइसोलेटेड जगह विलेजेस में आई मीन उनको सबको ये अफेक्ट नहीं होता है, समझ में नहीं आता है।
जब हम एक एक्शन लेके जाते हैं, जब हम साइकिल यात्रा में जाते हैं, बहुत मतलब कि मोर देन 500 नन्स हम जाते हैं, तो उनको देख के लगता है कि क्वेश्चंस मार्क हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं तो सबके दिमाग में एक होता है ना कि वाई। इसलिए जब हम साइकिल यात्रा करते हैं, जब हम एक जगह में रेस्ट करते हैं, तो मतलब कि बहुत सारे आदमी आते हैं। फिर जब मीडिया आता है, जब हमारे को एक अपना शेयर करने मिलता है, हम क्यों आए हैं, हम मतलब कि वहाँ पर बहुत मतलब कि ग्रैंडपा ग्रैंडमा वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास मतलब कि उन्होंने नॉलेज नहीं होता है, मतलब कि उन लोगों को हम आराम से समझाना होता है हमारे को एक्शन के थ्रू हम क्यों कर रहे हैं, हाउ इम्पोर्टेंट द ह्यूमन इज़, हाउ इम्पोर्टेंट द इन्वायरमेंट इज़। जब हम ये सब बोलते आए तो उनको समझ में आता है तो हाँ कर रहे हैं। वो लोग भी बहुत शॉक हो जाते हैं। एट फर्स्ट हम एक लड़कियां कर रहे हैं, फिर सेकेंड वो लोग फर्स्ट हम जब आउटफिट में होता है तो वो लोग सोचते हैं हम कहीं बाहर से आए हैं, चाइना से आए हैं, ये वगैरह भी पूछते हैं। जब हम एक दूसरे से हम विलेज के लड़कियां आर्मी उनके साथ जब रिलेटेड हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा मैसेज और ज़्यादा उनको अफेक्ट हो रहा है। तो हम ऐसा एक्शन लेके हर गांव जाते हैं। फिर जब स्कूल्स वगैरह में जाते हैं तो बहुत लड़कियां आते हैं, मतलब कि उन लोग के जो फेस कर रहा होता है। फिर हम मतलब कि हम वी बिलीव के ह्यूमन हैव देयर ओन ब्यूटीफुल होता है ना, कुछ हो उनके पास देयर ओन ब्यूटीफुल पावर्स है जो उनको हम अच्छे से बोले। मतलब कि हम उनको हम ये नहीं बोलना चाहते कि ये तुम नहीं कर सकते। हम मेरे को ये लगता है कि पेरेंट्स या अपना कम्युनिटीज़ नेबर्स उनको सपोर्ट दिए गर्ल्स उनको कि आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में ट्राई नहीं करते, मतलब कि ये तुम नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं बोलेंगे तो बोलो, नहीं तो ऐसा हो जाता है ना, उनके दिमाग में ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। पहले तो कुछ भी काम हमारे को मतलब कि कुछ भी करने नहीं आता था, मतलब कि आराम आराम से सब कुछ सीखना पड़ता है। इसलिए मेरे को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि गर्ल्स की एवरी पेरेंट्स उनको सपोर्ट दे आगे बढ़ने के लिए, हर मतलब कि एजुकेशन दे। मतलब कि होता है ना उनको, मतलब कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम एजुकेशन पढ़ते ही सब आ जाए, नहीं, एक बार गिरते हैं फिर भी पर सपोर्ट, मतलब कि ऐसा जब एक फैमिली के साथ हम बड़े हो जाते तो हमारे को अफेक्ट जो होता है ना, फैमिलीज जो बोलते हैं अपना घर में अपना फैमिलीज का अपना अपना डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट रूल्स होता है। पर जब कुछ काम जो अपने को अच्छा लगे तो वो मतलब कि थोड़ा आप खुद हार्ड वर्किंग करके आगे बढ़े, मतलब कि उनको सबको सपोर्ट दे। ये सब हम सोचते हैं। जैसे मेरे को लाइक मैं 10 साल में नन्स बनने के बाद मेरे को सबसे चैलेंज ये था कि मेरे को सुबह 3 बजे उठ के अपना मेडिटेशन करना पड़ता था। फिर हमारा डेली रूटीन सुबह 3 बजे से रात को शाम को 10 बजे तक चली होता है। जैसा सुबह 3 बजे हम उठते हैं, उसके बाद हमारा अपना मतलब कि अपना लेवल डिफरेंट लेवल के साथ डिफरेंट मेडिटेशंस होता है सीनियर जूनियर का। फिर 2 घंटा हम अपना प्रेयर्स अपना मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद मॉर्निंग प्रेयर्स बोल के हमारा अपना मेन टेम्पल में हमारे को सबको जाना पड़ता है। उसके बाद हमारा 2 घंटा या 3 घंटा का हमारा मॉर्निंग प्रेयर्स होता है। फिर उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट टाइम होता है। फिर ब्रेकफास्ट के बाद फिर हमारा डिफरेंट क्लासेस होता है, डांसिंग, मार्क्स डांस, म्यूज़िक, पम्पिंग, इलेक्ट्रॉनिक, पेंटिंग, वायरिंग, इंटरनेट, क्लीनिंग, गार्डनिंग। हम ये सब क्लासेस हम डिफरेंट ग्रुप्स में वो करके हम मतलब कि 2-3-4 घंटे तक हम अलग अलग क्लास लाइक टिबेटन क्लास, इंग्लिश क्लास, ये सब हम अलग तरीक़ा से हम 12 बजे तक चलता है हमारा प्लेट। फिर 12 बजे के बाद हमारा लंच टाइम होता है। फिर 2 बजे तक हमारा रेस्ट होता है। जब रेस्ट के टाइम पे बहुत सारे सब रेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे के पास अपना 2 बजे के आगे और क्लासेस उनके लिए प्रिपरेशन करना होता है, मेमोराइज़ करना होता है, वो सब करते हैं। फिर उसके बाद फिर 2-3-4 बजे तक फिर अलग क्लासेस अलग अपना काम होता है। फिर जैसे जो कुंफू करता है नन, जो काम वर्किंग करता है, जो एक रिचुअल प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, वो सब करते हैं। फिर अगेन हमारा एक 4 बजे टी टाइम होता है। उसके बाद हमारा अपना फिर अगेन मेन टेम्पल में इवनिंग प्रेयर्स होता है। फिर उसके बाद हम
इवनिंग प्रेयर्स 2 घंटे के बाद हमारा लास्ट कुंफू हम रात को शाम को करते हैं कुंफू 2 घंटे के लिए हम रेगुलर कुंफू करते हैं, फिर हम डिनर नहीं खाते हैं। और हमारा डिनर नहीं खाने का मतलब ये है कि हम रात को डिनर नहीं खा के सुबह हम जल्दी उठ के हमारे को मतलब हेल्दी फील होए, क्योंकि जब हम रात को ज़्यादा खाते हैं तो हम आई थिंक सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। इसलिए हम एवरी नन्स डिनर नहीं लेते, पर यंगेस्ट जो नन्स है 6, 7, 8 साल तक जो यंगेस्ट नन है वो लोग डिनर खाते हैं। फिर उसके बाद मैं कुछ रेस्क्यू के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारा ननरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनिमल्स है जो मतलब कि हम रेस्क्यू करके लाते हैं। जब हम पद यात्रा करते हैं, जब हम साइकिल यात्रा करते हैं, तो हम वहाँ पर जो एनिमल्स जो वुंडेड होता है, जो सफरिंग कर रहा होता है, वो सबको हम रेस्क्यू करते हैं। और हम लोगों ने बहुत सारे किया। रिसेंटली हम लोगों ने अभी एक काऊ भी रेस्क्यू किया है जो बहुत मतलब कि बैडली इंजर्ड है, जो सफरिंग फ्रॉम आई थिंक उसका पेट में कुछ मतलब कि आई थिंक इट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट लाइक मतलब कि पानी में आई थिंक उस लोगों ने पानी में आई थिंक ग्रास में उन लोगों ने मतलब प्लास्टिक खा के मतलब कि ऐसा ऐसा कुछ इन्वायरमेंट के लिए वो भी अभी हम ट्रीटमेंट में है उसका अभी। फिर जब हम पद यात्रा साइकिल यात्रा करते हैं तो हम ये भी बोलना चाहते हैं कि एनिमल उनको मतलब कि जब वुंडेड होता है, जो सफरिंग होता है, वो सबको हेल्प करना चाहिए। मतलब कि लाइक जैसा लास्ट टाइम जब हम लोगों ने एक डॉग जो वुंडेड था उसको हम लोगों ने मतलब कि ट्रीट करना था। जब हम उसको पकड़ने के लिए हम जा रहे थे तो गांव वाले बोल रहे थे कि क्यों वेस्ट कर रहे थे, क्यों वेस्ट कर रहे ये पैसा, होता है ना, क्यों ऐसा स्ट्रे डॉग को ऐसा ट्रीटमेंट करना बोल के बोल रहे थे। फिर हम लोगों ने ये बोला कि होता है ना, ये हमारा एक धर्म है, मतलब कि इट्स आवर धर्म, लाइक हेल्पिंग अदर इज आवर रिलीजन। होता है ना, मतलब कि हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा एक बुद्धिस्ट होने का काम एक कंपैशन है जो हम सबको शेयर करना चाहते हैं। सो यही चीज़ हम बोलते आए हैं। फिर जैसा हम अमिताभ, जब हम एक ननरी में भी जब हम बैठे तो हम एवरी पैंडमिक से पहले एवरी सैटरडे हम लाइक इन इंडिया संडे इज़ लाइक हॉलीडे, इन नेपाल सैटरडे इज़ हॉलीडे। सो हम सैटरडे को इन्वायरमेंट के लिए हम साफ़ करने जाते हैं, हमारा ननरी से बाहर जाते हैं हम क्लीनिंग कैंप के साथ, एक ग्रुप के साथ जाते हैं, नन्स मतलब कि हम सब जाते हैं। तब सैटरडे हम स्पेशली क्यों करते हैं कि उस टाइम बहुत मतलब कि विजिटर्स होता है। जैसे यहाँ पर एक मतलब कि फेमस स्तूपा है, मंकी स्तूपा बोल के, वहाँ पर हम इन्वायरमेंट के लिए साफ़ करता है। तब हम एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं, मतलब कि उनको पता चले कि हम क्यों कर रहे हैं, है ना, इन्वायरमेंट हाउ इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट। इसलिए जब वहाँ पर आर्मी ज़्यादा आते तो एक बार फेंकते हैं, सेकेंड बार फेंकते हैं, मतलब कि हर बार, मतलब कि जब हम हर बार जाते तो उनको लगता है कि नो, हमारे को अब डस्टबिन में यूज़ करना चाहिए, यू शुड वी हैव टू क्लीन, होते हैं ना। उनको हम ऐसा करके मैसेज थोड़ा शेयर करना चाहते हैं जो उनको जल्दी इफेक्ट हो। जैसा लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम में जब हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया था तो सोचते थे कि नन्स आएंगे साफ़ कर लेंगे, ऐसा नहीं था। मतलब कि हमारा मैसेज ये है कि उनको भी लगे कि इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, होता है ना, क्लीन करना चाहिए ना, प्लास्टिक इज़ नॉट यूज़फुल, होता है ना, ये प्लास्टिक बहुत एनिमल्स, वाटर, हमारा इन्वायरमेंट उनको अच्छा नहीं हो रहा है बोल के ये मैसेज उनको पता चलना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि हमारा जो वर्क से वो बहुत सारे को इन्फेक्ट हो रहा है। जैसे लास्ट टाइम हम जब अभी इन्वायरमेंट के लिए जब साफ़ करने जाते हैं तो अभी हमारा नेबर्स, हमारा कम्युनिटीज़ का लड़का लड़की सब हमारे को हेल्प करने आते हैं, मोर देन 1000 पीपल्स आता है। तो अभी हमारे को बहुत खुश हो रहा है क्योंकि अभी जब पहले हम लोगों ने फर्स्ट स्टार्टिंग किया था तो सब हमारे को मतलब कि क्यों कर रहे हैं, होता है ना, अच्छा कमेंट नहीं था, क्रिटिसिज्म ज़्यादा था। जब अब बहुत सारे हेल्प करने आ रहे हैं, बहुत सारे अभी भी पूछते हैं कब स्टार्ट करना है, क्योंकि हम अभी पैंडेमिक में हम मतलब कि अमिताभ से हमारा अपना ननरी से ज़्यादा बाहर नहीं गए थे, तो बहुत सारे पूछते हैं कब इन्वायरमेंट क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। फिर होता है ना, जब ऐसा मतलब कि चेंजेस आते हैं तो हमारे को भी अच्छा लगता है। फिर हमारे को भी ये लगता है कि हम और आगे बढ़ें। जैसे कोविड रिलीफ में भी हम लोगों ने बहुत सारे
वो सप्लाईज किया था। तो होता है ना, कम्युनिटीज़ में हम लोगों ने जब मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया था, सैनिटाइजर यूज़ कैसे करना है, मतलब कि हाउ यूज़फुल होता है, जब ये सब बात किया था तो हमारे को भी खुशी लगता है कि वो लोग भी हमारे से बहुत एजुकेट, मतलब कि वो लोग चाहते हैं कि हम भी हमारा एक दूसरे का एजुकेट बढ़े, जैसा उनके पास भी बहुत सारा एजुकेशन है जो हमारे को पता नहीं है। जैसे हमारा अपना एक फील्ड में हम अपना वेजिटेबल्स वो करते हैं, तो हमारे को उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो हम अपना कम्युनिटीज़ का गर्ल्स वुमेन को पूछते हैं, तब वो लोग भी हम एक दूसरे को जब हमारा अपना एजुकेशन वगैरह इधर उधर चेंज करते हैं तो हमारे को अच्छा लगता है, और मतलब कि होता है ना, मतलब कि एजुकेट हो जाता है। सो आई थिंक आई विल end up here. I think Rupala will talk. हेलो एवरीवन, जो हम सब अभी ज्वाइन है, तो हेलो, माय नेम इज़ जिग्मे रूपा लामो। मैं हिमाचल प्रदेश, नॉर्थन इंडिया, तो आप लोग को पता ही होगा, मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। हिमाचल प्रदेश में एक बहुत छोटा सा जगह है जहाँ लाहौल स्पीति कहते हैं। शायद कईयों को ये जगह पता होगा, ज़्यादातर लोग जानते नहीं है, जैसे दिल्ली मुंबई साइड के लोग जानते नहीं है लाहौल स्पीति कहाँ है। मैं उस जगह से बिलोंग करती हूँ, और वेरी स्मॉल विलेज। और जब मैं नन बनी थी तो उस वक्त मैं 13 की थी। तो व्हेन आई वाज 13, हिज ऑनेस्टी गिलवांग रूपा, जो हमारे अभी रूट गुरु है, वो हमारे विलेज में आए थे। तो उन्हें हमें स्पीच दिया था। स्पीच वैसे थी तो इंग्लिश और टिबेटन में थी। तो उनके साथ कुछ और टीचर्स भी थे जो हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने हमें टीचिंग्स दी इन्वायरमेंट के बारे में, वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में, हाउ स्पेशल, हाउ इम्पोर्टेंट गर्ल्स आर, इसके बारे में हमें स्पीच दी थी, टीचिंग्स दी थी। तो उन बातों से मैं बहुत इंस्पायर हुई थी। मुझे लगा था कि एक छोटी सी एक फीलिंग थी कि कोई तो है जो गर्ल्स को जानते हैं, गर्ल्स की फीलिंग्स जानते हैं, गर्ल्स की इम्पोर्टेंस जानते हैं। तो मैं उनसे कनेक्ट होना चाहती थी। आई वॉन्ट टू कनेक्ट देम विद हिम। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नन्स बनूंगी, मैं उनकी स्टूडेंट बनना चाहूँगी। तो जैसे सर ने कहा था कि आई एम द ओनली वन गर्ल इन माई फैमिली, और मम्मी बिल्कुल भी इसके लिए राज़ी नहीं थी। मम्मी बहुत ही डिस्टर्ब थी मेरे इस डिसीजन के बारे में कि मैं नन बनना चाहती हूँ, और मुझे बहुत दूर आउट ऑफ द कंट्री जाना, और जबकि मैं एक 13 साल की लड़की थी। तो हम मेरे फैमिलीज़ के लिए बहुत मुश्किल डिसीजन था कि मुझे नन्स बनने भेजा जाए। तो मैंने बहुत ज़िद किया, 3 दिन लगातार रोती रही, खाना नहीं खाया, स्कूल अटेंड नहीं करा। तो स्कूल रूल होता है कि 10 दिन के बाद अगर स्कूल अटेंड नहीं किया जाए तो स्कूल से हमें रिज़ाइन मिलता है। तो 9वें दिन ही मुझे लेटर आया था स्कूल से कि डू यू वांट टू जॉइन, तो अभी भी जॉइन करती है कि और रिज़ाइन करती है, स्कूल छोड़ना चाहती है। तो मैंने उसी वक्त डिसाइड किया था कि मैं स्कूल छोड़ूंगी और मैं नन बनना ही चाहूँगी। तो जैसे तैसे करके घर वालों ने मुझे भेज दिया, बहुत ज़िद करके, क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी थी और मैं बहुत शरारती थी व्हेन आई वाज़ यंग। तो उसके बाद मैं नन बनी, एंड नन बने हाँ, कुछ 1-2 साल तक तो लाइक नॉर्मल था। हम जैसे मैंने सोचा था, मतलब उतना मुश्किल तो नहीं था कुछ। उसके बाद जब गिलवांग रूपा हमारे रूट गुरु ने जब कुंफू लाया, कुंफू इसलिए लाया क्योंकि हमारे रिमुचे के गिलवांग रूपा के कुछ स्टूडेंट्स वियतनामीज भी है, वियतनाम के हैं। तो उनका ननरी कुछ जंगल टाइप में है, कुछ बहुत जो खुफिया जगह होता है जैसे जंगल टाइप में। तो वहाँ बहुत सारे चोर चकेती वो लोग आए थे। तो वो बताते हैं कि उनके वहाँ पे ऐसे डेंजर्स रहते हैं, ऐसे अटैक्स होते हैं। तो उन्होंने कुंफू सीखा था। जब वो लोग हमारे ननरी में आए थे तो वो लोग सुबह या शाम को अपने एक टाइम निकाल के वो लोग कुंफू सीखते थे। जब हमारे द गिलवांग रूपा ने देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्यों कुंफू करते हो तुम लोग, कुंफू करने का रीज़न क्या है। जब उन्हें पता चला कि उन्हें लगा कि हमें भी कुंफू सीखना चाहिए, हमें भी मोटिवेट किया जाए, तो उन्होंने हमें भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी कि हम भी कुंफू सीखें। और हमने कुंफू स्टार्ट 2008 में बेसिक स्टार्ट की थी। सिर्फ एक्सरसाइज करते थे, एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग्स ये सब करते थे। हमारा जो कुंफू का जो मेन पार्ट होता है, हमने वो 2012 से स्टार्ट करी थी। 2012 से स्टार्ट करी थी। तो उस वक्त बहुत ही मुश्किल था कुंफू करना, लाइक क्योंकि मैं बहुत शरारती लड़की थी। व्हेन आई वाज विद माय फैमिली, मैं बहुत ही शरारती, बहुत ही बुरी लड़की थी। मैं हर लड़कों से झगड़ा करना, हर क्लास में शरारती करना, ऐसी थी मैं।
तो मैं कुंफू सीखने के लिए बहुत एक्साइट थी। और जहाँ तक मुझे याद है, शायद मैंने सबसे पहले साइन करा था कि मैं कुंफू सीखना चाहूँगी बोल के। तो फिर हाँ 2 साल तो कुछ नॉर्मल से चला था। फिर उसके बाद व्हेन हमने स्टार्ट किया, इट वाज वेरी 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 डिफ़िकल्ट। बहुत ही मुश्किल था वो पल हमारे लिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग हमारे कुंफू सर को बुलाया गया था फ्रॉम वियतनाम। हमारे कुंफू सर वियतनाम से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वियतनाम में भी जो हमारे गुरु के जो स्टूडेंट्स थे वो वियतनाम से ही, तो वहीं से ही हमने हैक किया था एक टीचर को। तो वो हमें वो आते हैं साल में एक बार और 1 महीने के लिए ही आते हैं। तो वो 1 महीना हमारे लिए बहुत ही बुरा महीना रहता है। हम दिन में 4 टाइम कुंफू करते हैं। स्कूल हमारे नंजी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लाइक प्रेयर्स, मेडिटेशन। फिर उसके साथ दिन में 4 टाइम का कुंफू क्लास, और वो कुंफू क्लास स्ट्रेचिंग सीखो, एक्सरसाइज करो, पनिशमेंट अगर 5 मिनट भी लेट हो जाए तो आधे घंटे का पनिशमेंट। ओ माय गॉड, बहुत ही मुश्किल होता था वो पल हमारे लिए। तो हमारे नंरी में ना बहुत ही लंबा सीढ़ी है, लाइक अब ऊपर से नीचे तक का एक सीढ़ी रहता है, वो पूरा हमें पैरों से हाथों के बल चलना पड़ता है नीचे को। वो हमारे लिए सबसे मुश्किल पनिशमेंट रहता है। Yeah. तो हाँ, जैसे अब बहुत मुश्किल से हमने कुंफू सीखा है। और कुंफू जब हम खुद इंस्पायर हुए कुंफू से, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम नन्स हो और तुम कुंफू करते हो, ये दो अलग अलग वर्ड है, तुम क्यों इसे चूज करते हो, तुम क्यों कुंफू करते हो, तुम एक नन्स हो, तुम्हें नन की तरह रहना चाहिए, मतलब काम रहना चाहिए, चुपचाप एक ननरी में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, हम कुंफू करते हैं, हम नन्स तो है, हम कुंफू भी करते हैं, क्योंकि एक छोटी सी एक चीज़ है जो कुंफू और हमारी नन लाइफ को जो जोड़ती है, वो है मेडिटेशन, काम। हमें जो क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। कुंफू में भी कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, और हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए भी क्या कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो ये बात मैं हाईलाइटली बताना चाहूँगी कि कुंफू और धर्मा प्रैक्टिस, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट, बट देयर इज़ अ समथिंग कि हमें दोनों चीज़ों के लिए हमें मेडिटेशन, हमें कंसंट्रेशन बहुत ही ज़रूरी होती है। और कुंफू के ज़रिए जब हमें ये फ़ील हुआ कि हम कुंफू करते हुए हम खुद को बहुत प्रोटेक्टिव फ़ील करते हैं, कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। हम ये कॉन्फिडेंट और ये प्रोटेक्टिव लोगों में बाँटना चाहते हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि कुंफू इज़ अ नॉट फॉर वायलेंस। हम लोगों से कुंफू के ज़रिए हम लोगों को मारना नहीं चाहते, लोगों को ये नहीं दिखाना चाहते कि हम किसी से लड़ सकते हैं। हम ये बताते हैं कि कुंफू के ज़रिए कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ खुद के नहीं, हमारे साथ जो है, हम जब कहीं भी हम ट्रैवल करेंगे, आउट ऑफ द विलेज, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री, हम खुद को प्रोटेक्ट फील कर सकें, खुद कॉन्फिडेंट फील कर सकें हम। तो उसी के ज़रिए हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग स्टार्ट करी। हमने सबसे पहले ये स्टार्ट करी फ्रॉम द हिमालयाज़, लद्दाख में। लद्दाख में हमने सबसे पहले ये 2017 में स्टार्ट करी थी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। तो हम 1 हफ्ते की ये ट्रेनिंग रखते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि एक हफ्ते में हम उन्हें पूरी मतलब जो हमने 15 सालों में सीखी थी वो सब सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। हम उनसे बातें करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उनसे हम कनेक्ट करते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम रहती है, वो हमसे क्या सीखना चाहते हैं, और हम उन्हें कैसे इंस्पायर कर सकते हैं। हम ये सब बातें उन्हें शेयर करते हैं। तो उस वक़्त लड़कियाँ 1 हफ्ते के अंदर वो हमें बताती है कि अब वो 1 हफ्ता कुछ बहुत हम कनेक्ट फ़ील करते हैं, क्योंकि हम उन्हें एक्सरसाइज़ेज़ सिखाते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स ये सिखाते हैं। और कुंफू कोई लाइक रिलीजन नहीं है। वो कुंफू हम हर किसी के लिए रखते हैं, नॉट फॉर बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स। फर्स्ट टाइम जब हमने कुंफू सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग रखी थी, तो वहाँ पे लद्दाख में बहुत सारे मुस्लिम्स भी रहते हैं। तो वहाँ पे 5 मुस्लिम गर्ल्स भी थी हमारे साथ। हम ये नहीं कहते कि हम ट्रेनिंग सिर्फ बुद्धिस्ट को ही देते हैं, हम हर रिलीजन्स को देते हैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। तो उस दौरान लड़कियां बताती हैं कि उन्हें स्कूल में बॉयज़ कैसे तंग करते हैं, पब्लिक बस में कैसे छेड़ते हैं। तो उन सब बातों से वो बहुत डिस्टर्ब रहती है, उन्हें पढ़ाई में मुश्किल होती है, मतलब वो चीज़ें उन्हें बहुत डिस्टर्ब करती है। तो उनसे कैसे वो मतलब
कैसे दूर हो जाए, कैसे उनको फेस करे, ये सब बातें वो हमें पूछती है। तो हम उन्हें कुछ टेक्निक्स बताते हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने साथियों को प्रोटेक्ट कर सके, कॉन्फिडेंट फील करे। तो हम ये कुछ बातें बताते हैं उन्हें, उनसे कनेक्ट करते हैं। तो वो वो हमसे इंस्पायर भी होते हैं और उनसे हम भी इंस्पायर होते हैं कि आजकल की लड़कियाँ कुछ करना तो चाहती है, पर उनके कम्युनिटी, फैमिलीज, कुछ फैमिलीज अभी भी सपोर्ट नहीं करती है। तो उन्हें कहती है कि अब लाइक हिमालयस, ये ज़्यादा केसेस होती है कि लड़कियों को मतलब किचन में रहना चाहिए, घर के कामों को संभालो, पढ़ाई ज़्यादा नहीं करनी है। हाँ, ग्रेजुएट तक तो ठीक है, उसके बाद नो जॉब्स, अपने घर के कामों को संभालो, फैमिली संभालो, ये सब सिखाया जाता है। तो हाँ, ये सब तो ज़रूरी है। लाइक गर्ल बी अ वुमेन, उन्हें फैमिली तो संभालना है। फैमिली संभालने के साथ साथ उन्हें तो उनके सपनों को भी तो पूरा करना है। हम पूरे फैमिलीज़ को वर्ल्ड ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड हम फैमिलीज़ को ये मैसेज करते हैं कि लड़कियों को सपोर्ट करो। गर्ल्स आर वेरी स्पेशल, गर्ल्स हैव अ वेरी स्पेशल पावर कि लड़कियां जो चाहती है वो करना चाहती है, कर सकती है, पर उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। तो हम ये चाहते हैं कि गर्ल्स को और ज़्यादा सपोर्ट मिले, उन्हें इनकरेज करे, जो अपने सपना जो रखते हैं, अपने ख्वाबों को जो रखते हैं, उन्हें वो पूरा करने की उन्हें सपोर्ट करे। उन्हें कभी ये ना कहे कि अब तुम लड़की हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, या मत करो। जितना हो सके उन्हें प्रोटेक्ट करो, उन्हें सपोर्ट करो। लड़कियां भी कुछ कर सकती है। हम ये नहीं कहते कि बॉयज़ से कुछ बढ़ के कर सकती है, कम से कम बॉयज़ के बराबर तो कर ही सकती है वो। यहाँ वो बॉयज़ बुरे नहीं होते, हर बॉयज़ बुरे नहीं होते और हर गर्ल अच्छी नहीं होती है। अब मेरे ओपिनियन में तो ये है कि हर लड़के गंदे नहीं होते और हर लड़की भी अच्छी नहीं होती। हम जहाँ तक कि हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो कम से कम उन्हें इक्वालिटी तो मिलना चाहिए, उन्हें ये चांस मिलना चाहिए कि वो कुछ करके दिखाए फैमिली के लिए, खुद के लिए, अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए। कुछ ना कुछ तो वो कर ही सकती है। तो फैमिलीज़ को उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करे, हम यही चाहते हैं। और हम पद यात्रास भी करते हैं, इसके ज़रिए हम पद यात्रास करते हैं। उन पद यात्रास हम बहुत सारी जगह जाते हैं। हमने आज तक लाइक 1920 कुछ ऐसा कुछ हमने पद यात्रा करी है। तो इस तरह हम बहुत रिमोट एरियाज़ पे जाते हैं, जैसे क्या कहते हैं, बोध गया, कुशीनगर, राजगीर, श्रीलंका एंड नेपाल में तो वंस अ ईयर तो होता ही रहता है। तो और मुंबई, बहुत सारी जगहों की। तो वहाँ पे लोग हमेशा यही पूछते हैं कि तुम गर्ल्स हो, तुम क्यों ऐसे चलती हो। जैसे इंडिया में बहुत ऐसे रिमोट एरियाज़ अभी भी ऐसी है जहाँ पे लड़कियाँ रात को नहीं चल सकती है, अकेली नहीं चल सकती है, कुछ शॉपिंग्स नहीं कर सकती है। तो वहाँ पे जो शॉपकीपर्स रहते हैं, जो बाहर लड़के चल रहे होते हैं, अंकल्स जो ग्रुप बना के, तो वो हमेशा टोकते हैं और हमेशा यही पूछते हैं कि तुम लड़कियां हो, तुम क्यों ऐसे चलती हो, ये एरिया अच्छा नहीं है और तुम्हें बहुत मुश्किलें होंगी। तो हम उस वक्त उन्हें हम ये मैसेज करते हैं कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। मतलब नहीं सिर्फ कि जैसे कुछ एरिया में कहते हैं कि ये जगह बहुत डेंजर है, लड़के यहाँ पे बहुत बुरे हैं और तुम्हें मतलब तुम्हारी लाइफ को मतलब यहाँ कुछ सेफ नहीं है, ऐसे कुछ हमें अब वो भी हमें हमारे अच्छाई के लिए कहते हैं, मतलब वो करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि इट्स नॉट अ गुड प्लेस, तुम्हें रात को नहीं चलना चाहिए, ऐसे बताते हैं। तो उस वक्त हम उन्हें बताते हैं कि लड़कियों को मत टोकें, जितना हो सके अपने लड़कों को भी बताइए कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करना, लड़कियां क्या चाहती है ये जानना। बहुत सारे ऐसी बातें हैं, तो आप लोग तो जानते होंगे, देखते होंगे न्यूज़ में बहुत सारे, आजकल तो ये सब चलती ही रहती है। और इसके ज़रिए और हाँ, दैट्स इट। और एनी क्वेश्चंस? Thank you very much, both of you. I think it's a wonderful story of yourself, how you have overcome a variety of difficulties and challenges, and you have followed the strict discipline and that routine that you always have every single day. I think that has built yourself, and that has built the entire process of how some of the young girls like you, who are shy, introvert, and some of them are naughty like you, all of them have become so fearless and bold, are Nirbhay. I mean, Jigme is your title.
Jigme means fearless. I think it's a huge transformation of diverse young women coming into nunnery and becoming so strong, fearless, and inspiring to the entire Himalayan range of folks who are living out there, and not just to the Himalayan range, but the entire country in India and abroad. I think there's a huge lesson for all of us to learn in terms of how we can go through this transformation. Some of the activities that you have done are very, very inspiring in terms of disaster relief, earthquakes and disaster relief to COVID relief on the recent times. I think you have been always there, and you left your imprints on the snow and on the minds of several people who received your help. The victims that have been helped by you is going to be remembered forever. You rescued girls on one hand, what is usually called the human trafficking problems that a variety of countries face, especially Nepal and India and the border areas, which are fraught with these dangers. And on the other hand, you have rescued several animals, and that is a very good thing. And the third and most important aspect is you are helping people understand the dangers that lie within the society. On the other hand, you're helping humans to be aware of the dangers that are lurking in the jungles as well. I think beautifully you have summarized your story, but one thing you have proved me wrong. I thought you will not speak much, but you have proved me wrong. If we had let you speak further, you would have consumed another 1 hour. You speak extremely well. You have lots of stories to tell, and I'm extremely happy that you've managed to cover most of the questions that we are about to ask you. So without much ado, I now request Professor R. Prasad to join and start the Q&A session. And probably we can focus on those questions which are not touched by both the nuns here. Over to you, Professor Prasad. Thank you. Thank you, Professor Sudhakar. I think very important things that I could gather from the narratives from our esteemed nuns. First is about removing fear, insecurity in one's life, and I think once food is given, shelter is given, there are a lot of women in the country who would like to do much more than what they normally tend to do. And fear and insecurity is one thing that keeps them away. And I think the Kung Fu as a practice, as a learning, has helped to put that away. So the fear is gone, as we say, fearless. And I think that itself helps one to discover oneself. So that's one very important takeaway, which answers a number of questions that people have. They have approached us from different sides. I mean, the wording of the question is different, but it's all like what you're saying when you go out. People ask you why are you doing this? You should be doing something else. So I think this set of questions is tackled, the way you have described your lives. So this is one thing. The other thing that I could find it from what you said is you have integrated Kung Fu with service to the world, and you have represented that in a number of ways. I mean, most people are worried about their livelihoods alone. How do they meet their daily bread? But you have gone beyond that, and you have talked about animals, you have talked about environment, you have talked about disaster, you have talked about care. I think so. The integration of Kung Fu with all this, and that too, what I would call women are known for care. So I think this has allowed you to care in a completely different way, not just the family, but the larger family outside. And I think it showed that potential through the stories that you have narrated. Now, coming to the questions which are there, you have answered, why did you make the decision to become a Kung Fu nun? I think one of you have answered that. I think you got inspired. So somewhere along the line, when our other ma'am also speaks, you can perhaps touch upon why this happened. The other thing that you've narrated is about how difficult it is to be a Kung Fu nun. What kind of orientation and training do you get? You also mentioned that. So another set of questions here is, beyond what is said, what is the relevance of Kung Fu nuns as an organization to the outside world? What examples does it give?
In Nepal, you have narrated some of the things that you have done. I mean, Nepal and disaster you narrated. But suppose you take it to a larger, a broader place. What messages are you trying to? What kind of relevance is the kind of work that you're doing to societies outside? Can you elaborate a bit more? What other thoughts do you have on this? Thoughts for doing more, we are thinking after the for more than 2 years we haven't did any works out of our nunnery. So we want I want to talk about the environment, how environment important is and how the human important is, because जब हम अभी भी और environment के लिए आगे काम करना चाहते हैं और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करना चाहते हैं, और हम ये इन्वायरमेंट के लिए क्यों करना चाहिए, इन्वायरमेंट हम काम क्यों करना चाहते हैं कि ये सबको अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ऑल्सो गेटिंग लॉट्स ऑफ इंजर्ड, होते ना हर साल मतलब कि नया नया बीमारी फैल रहा है। ये सब हमारा एक एलिमेंट जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्लीन नहीं होने के कारण से है। जो वाटर्स होता है, जब वाटर में हम प्लास्टिक्स फेंकते हैं तो प्लास्टिक से बहुत एनिमल्स को मतलब कि इंजर्ड होता है, उनको अफेक्ट बुरा असर होता है। तो हम पहले एक इन्वायरमेंट से आगे काम फिर करना चाहते हैं। जैसे हम एक पदयात्रा करते हैं, तो जब हम पदयात्रा हम एक चलने का जो जर्नी करते हैं तब हम प्लास्टिक हम कलेक्ट करते हैं। जब हम एक प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं तो हम ये नहीं बोल रहे कि हम पूरा साफ एरिया साफ करते हैं या हम बहुत बड़ा मतलब कि जगह कवर करके साफ करेंगे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एक छोटा मतलब कि छोटा सा जगह को पूरा क्लीन करना बहुत मुश्किल बात है, पर जब हम एक छोटा मैसेज दे के जब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम जब थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक उठा के हम एक एक गांव जाके हम आगे बढ़ते, तो सब मतलब कि गांव का जो आर्मी वगैरह पूछते आते हैं, तब उनको भी लगता है कि प्लास्टिक वगैरह हम वाटर में नहीं फेंकना, मतलब कि गार्डन में नहीं रख सकते। जो ग्रीन जगह होता है वहाँ पर नहीं रखेगा तो इट्स नॉट सेफ्टी फॉर द एनिमल्स। जब ये चीज़ वगैरह उनको पता चले तो हम फर्स्ट हम एक इन्वायरमेंट के साथ आगे काम करना चाहते हैं, और सेल्फ डिफेंस के साथ हम आगे और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग वुमेन को और आगे और बहुत अलग जगह में देना चाहते हैं। हम ये काम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। Thank you for adding points about where you want to focus, and I think this theme is relevant for everyone, not just in Nepal. It is relevant across the world. The care for the environment, and you also emphasized on how by doing the padayatras you have generated awareness. Yes. Generated awareness as well, also habit formation. Because it is difficult to break old habits. You tend to because it's very difficult, because every isolated villages the parents have their own views, different views, because they have only, for me also, when I was very young, I heard many of the parents talk about that they only need sons, they don't need daughters, they only need sons. This kind of things that they really make the people crazy, and these things have to be we don't need, we have to come out from this all things. Yes, there is much more to life than having 2 square meals a day. Generating livelihoods, and also the safety and security that perhaps men have dominated till now. And you're showing that there's much more to do in this world than that. Thank you very much for that response. The next question I have is about what makes you motivated to stay on this path. There is a lot of practice, struggle. So how do you keep yourself motivated to do this? हमें मोटिवेट इस चीज़ से होता है कि हम जितना लोगों की हेल्प करते हैं वो उतना रिस्पॉन्स करते हैं, हमें उतना सुनते हैं, हमारी उतने बातों को फॉलो करते हैं। कुंफू के ज़रिए लड़कियां बहुत इंस्पायर होती है, जो बहुत प्रोटेक्ट फील करती है। जो 2017 में जब हमने फर्स्ट सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग रखी थी,
और उसके अगले साल जब हमने वापस वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की थी, तो लास्ट ट्रेनिंग वाले हमसे मिलने वापस आए थे, तो वो वापस हमें शेयर करते हैं कि जो हमने उन्हें टेक्निक सिखाए थे, जो हमने उन्हें इंस्पायर करा था, वो उन्हें कितना हेल्पफुल रहा, तो वो उनसे कितने इंस्पायर हुए और वो उनकी कितना यूज़फुल रहा। तो ये बातें हमें और ज़्यादा इंस्पायर करती और ज़्यादा मोटिवेट करती है कि हम उन बातों को उन चीज़ों को हम कंटिन्यू करें, हम उन लड़कियों को इंस्पायर कर सकते हैं, और लड़कियों को हम ये मतलब मैसेज पहुंचा सकते हैं कि यू कैन डू समथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। ये बातें हमें ज़्यादा मतलब मोटिवेट करती है। फॉर मी एज अ बुद्धिस्ट नन, मुझे ये लगता है कि एज लाइक हमारा एक बुद्धिस्ट में एक अपना प्रैक्टिस होता है, जिस प्रैक्टिस में हमारा एक कंपैशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हमारा एक कंपैशन एक हमारे को एक एक्शन में जब हम एक मतलब कि सोशल एक्टिविज्म वर्क्स वगैरह करते हैं, तो जब और ज़्यादा मोटिवेशन देता है। जब हमारा एक प्रैक्टिस बहुत यूज़फुल हो रहा है, तो मतलब कि ये प्रैक्टिस भी हमारे को और आगे बढ़ाता है। हमारा रिचुअल प्रैक्टिस और हमारा एक जो एक्शंस है, कंपैशन टू एक्शन, जो दोनों साथ में चलता है, तो और मोटिवेशन और आगे और बढ़ने का हमारे को मतलब कि वी फील वेरी हैप्पी टू डू दिस। Excellent, excellent. I think what you have said is that firstly that Kung Fu is a differentiator which makes you feel special and also makes other women feel special because it empowers. And you're training them, you get a lot of very positive feedback about how you're empowering them. And this training is not the usual one, it's about Kung Fu, so it's for women. So I think that's the differentiator which is helping you to feel special yourself and feel that you are serving a purpose. So this is one point I could understand. The second point is about compassion, and I think that goes also with this dharma. So I think a lot of work that you're doing, particularly that which you spoke about for the environment, disaster, people care, etc. I think that is also when you live a life of compassion, it is truly empowering, and I think it comes back as that you need to do more of it. It grows on more and more. Excellent. I think these are dimensions that those who are looking at perhaps in our language more of money, more of fame, more of power, this is new, so this is a completely different dimension that you have brought to the table. So now let me ask you a very practical question. We were talking about the earning of livelihoods, etc. So I come to income and expenditure. How does a social organization like this survive? How do you manage your income and expenditure? ऑर्गेनाइजेस हम गिलवंग ट्रुपा ने एक लिव टू लव एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया है। उनके फाउंडर गिलवंग ट्रुपा है, द लिव टू लव। वो हमें उनके ज़रिए हम ये लिव टू लव की ट्रेनिंग्स कुंफू सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स हम करते हैं, और पद यात्रा, साइकिल यात्रा, जो भी हमारे जो सोशल वर्क रहते हैं, तो वो लिव टू लव से ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आपको इसमें इनकम कहाँ से आते हैं? इट्स नॉन प्रॉफिट है। लिव टू लव एक ऐसा एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट एनजीओ है, जो हम अलग बहुत इंटरनेशनल एनजीओ है। तो जब हम इसके बारे में आगे हम जो काम कर रहे हैं उनके बारे में हम पहले मतलब कि सोशल नेटवर्क में जब डालते हैं तो डोनेशन वगैरह करते हैं, तो हम वो यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं। So looking at the good work that you do, there are people who come forward and make Yes. contributions so that more such work is done. Yeah, they help. So just to get a case and a situation from you, can you illustrate the biggest challenge that you have faced in your journey till now? बिगेस्ट चैलेंज, देयर इज नथिंग अ बिगेस्ट चैलेंज। बिगेस्ट चैलेंज तो हमारे लिए हमेशा यही रहा है कि लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। लोग ये कहते हैं कि यू आर अ गर्ल, यू आर मतलब तुम यंग गर्ल्स हो, तुम छोटी हो अभी, मतलब तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो, पदयात्रा, कुंफू करना, ये कुंफू गर्ल, तुम एक बुद्धिस्ट हो, तुम एक नन हो, तुम्हें मतलब ननरी में रहना चाहिए, तुम क्यों कुंफू करती हो, कुंफू इट्स अ वायलेंस। और लोग कहते हैं कि तुम मतलब
चाइनीज़ के मतलब स्टूडेंट्स हो, कुंफू हमेशा चाइनीज़ पे ही मतलब फोकस करता है ज़्यादातर, बट चाइनीज़ मतलब कुंफू इज़ नॉट फ्रॉम चाइना, इट्स फ्रॉम आवर प्योर इंडियन। तो ये हमें ज़्यादातर मतलब यही हमारे लिए ज़्यादातर चैलेंजेस रहती है कि हमें हमेशा यही लोगों को मैसेज देना पड़ता है कि मतलब हम नन्स हैं पर हम कुंफू भी करते हैं, और हम कुंफू क्यों करते हैं, हमें यही ज़्यादातर चैलेंजेस रहती है कि यही चैलेंज रहती है हमें कुछ मतलब बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं रहता कोई। Anything else from your side, ma'am? What you have seen in your life? For me, my biggest challenge is that I wake up at 3 a.m. and I couldn't get you, ma'am. Can you repeat that? I'm telling that it's my biggest challenge that it's very hard to wake up at 3 a.m. in the morning. And the second one is that at the first, when after the earthquake, after the 2015 earthquake and 2016, we decided to go cycle yatra from Nepal to Ladakh. Like, I think that I think that the senior nuns just they are just making a joke. मैंने सोचा है कि ऐसे बोल रहे senior nuns. जब हम लोग मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम एक साइकिल पे एक होता है ना कि नेपाल से हम लद्दाख तक जाएंगे बोल के मैंने अभी सोचा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जब हम एक ग्रुप हो कि हम बाहर निकले थे, वो मतलब कि हम जाएंगे बोल के, तब हम यहाँ से जब लद्दाख पहुँचे थे तो वो 3-4-5 महीने का जो सफ़र था वो मेरा मतलब कि लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज था। मैंने मतलब कि कभी भी नहीं सोचा था। होता है नहीं कि जब मैं लद्दाख पहुँचूँगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर स्नोइंग हो रहा था, बहुत ठंड था। जब हम यहाँ से जा रहे, जब इंडिया में थे तो बहुत गर्मी था। जब हर एक स्टेट पहुँचते हमारा जब वेदर चेंज हो रहा था, तो होता है ना हर वेदर के साथ हमारे को यूज टू होना था। तो वो 4-5 महीने का जो मेरा लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज वो था। I think you have illustrated both the minds and the mental side of it as well as the physical side of it. I think I can't hear you. I'm sorry. Society has. Is it audible now? It's very good. Looks like you have stopped all the wind. Yes, there was a fan around, so I think I stopped that. Oh, So sorry. I think it's very hot in your place. yeah, not an issue, because you are giving a lot of relief from what you say and what you do. I think that itself is very cooling, very soothing. So what I was coming to, so what I was coming to is, from what you understood is, I think our first ma'am mentioned about society. I think that's a very mental societal mindsets, and people conditioned in certain ways by which that's natural. There are a lot of people in India like that, a lot of people around the world like that. And I think first thing is that we have to be patient and work on that. So I think you have indicated that as a challenge, and it will continue to remain a challenge, I suppose. And the second one is, the first one is purely physical, 3 a.m. And I think it's tremendous that both of you, or all of you wake up at 3 a.m. We can't imagine it, for most of us, most people, humanity, I don't think they can imagine getting up at 3 a.m. So that's a huge barrier, which gives you a lot of confidence about how you go about doing other things. And I think you mentioned about how you imagined something about the Padayatra, and finally you broke your own mindset and you were able to make it. So thank you very much. I think the other questions in this cluster are answered. I hand it back to Professor Sudhakar. Thank you very much. I think this conversation is extremely profound, and at the same time, it's very simple for people to pick up certain lessons in terms of what can be learned from the life of Kung Fu nuns. It's very interesting as well, given the anecdotes that you're sharing and given the events that you're sharing. It's very, very inspiring as well. In my view, it is the biggest challenge I face in these conversations is a large part of the discussion is already over before it is handed over back to me. So that is my biggest challenge. But still, keeping pace with the available time, what I will now do is I will focus on 2 or 3 important questions, very simple and short answers we can expect from you. Why Kung Fu?
आत्मनिर्भरता या आत्मरक्षण करने के लिए कुछ और भी कर सकते थे। आपके ड्रुपका ऑर्डर में कुंफू क्यों शुरू किया गया है? योगा भी कर सकते थे, लेकिन कुंफू का चॉइस क्यों आया? जहां तक आपको जानकारी है, अब बताइए, व्हाई कुंफू वाज चोजन? जैसे मैंने पहले कहा था, कुंफू इज़ सिर्फ वायलेंस के लिए नहीं होता है। कुंफू एक ऐसी चीज़ है जो हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से भी कनेक्ट करती है। जैसे कुंफू के लिए भी हमें कॉन्सेंट्रेट, काम वन और सेकेंड हमें नो, कुंफू से जो जो फायदे हैं वो हम जान चुके हैं, लेकिन जब शुरुआत हुई तो क्यों कुंफू चुना गया है? योगा क्यों नहीं चुना गया है? कुछ और क्यों नहीं चुना गया? नो नो, लाइक हमारा जो एक सेक्रेट मेडिटेशन होता है उसमें भी योगा होता है, तो हमें कुछ बाहर करना था, क्योंकि वो जो सेक्रेट मेडिटेशन होता है वो वी कांट शो नाउ टिल नाउ। हमारा एक योगा होता है जो नारूपा 6 योगास बोल के, जो हमारा एक बहुत बड़ा एक ड्रुपा का एक ज्वेलरी है जो बहुत सेक्रेट होता है। वो मेडिटेशंस योगा भी होता है, उसका बहुत डिफरेंट पार्ट्स होता है। वो हम बाहर शो नहीं कर सकते। सो हम लोग ने कुंफू से स्टार्ट किया, एक्सरसाइज और कुंफू से एक शुरू किया। Okay, now I understand. So Kung Fu is something which is definitely helping you as an exercise, and it is demonstratable. Yeah. Yes. Can be shown to the others as well. Yeah. And but जहां तक मेरी जानकारी है, कुंग फू आपको एक वॉरियर जैसा डिफाइन करता है। आपके प्रति जो भावना रहेगा वो तो योद्धा जैसा भावना रहेगा अगर आप कुंग फू सीखेंगे तो। वो एक तरफ है। दूसरी तरफ आप बुद्धिस्ट नन है। Buddhist nuns are supposed to be silent, they are supposed to be meditating and all. That is the first point. Second point is Buddhism and various other sects, wherever there is the freedom given to women, that is always limited. जो ननरी हो या religious practices हो, आम society में भी हो, हर जगह limitations on women were always there. But this Kung Fu has completely emancipated or liberated young women to practice these things and go. So ये जो difficulty हुआ है, कितनों सालों में ये merge हुआ, completely bridge हो चुका है। और शुरुआत में तो difficulty हुई होगी, लेकिन जहां तक आपकी जानकारी है, कितना समय लगा, कितने साल लगा ये पूरी परिवर्तन लेके आने में, जो acceptance के लेवल पे लेके आने तक? जैसे फर्स्ट हम लोग ने 2010 से 8 से स्टार्ट किया था, तब मैं नन नहीं थी। जब हम 2010 में भी कर रहे थे तब बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि हमारा जो बुद्धिस्ट का जो फॉलोअर्स बहुत डिफरेंस होता है, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है जब एक नन्स एक कुंफू करके बाहर निकले, क्योंकि एक कुंफू करना, एक नन्स एक एक्सरसाइज करना बहुत सालों पहले से एक बैन किया गया है। जब हम एक रूल्स एक ब्रेक करके आगे आ रहा, तो बल्कि बहुत क्रिटिसिज्म सुनना मिलता है, बहुत अच्छा कमेंट्स नहीं होता है। जब हम जब हमारे को ये बैड क्रिटिसिज्म जब हमारे को सुनने मिलता है, तो हमारे को और एक मौका ये मिलता है कि हमारा मेडिटेशन में हमारे को ये हेल्प करता है कि हमारे को अगेन एक बार हम अपने को एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सच में ये किसी को हार्मफुल तो नहीं कर रहा है। इफ ये क्वेश्चन हमारे को सही लगता है, ये क्वेश्चन हमारे को ये आंसर देता है कि हाँ, ये कोई किसी को हार्मफुल नहीं हो रहा है, ये हमारे खुद का अपना बॉडी एक्सरसाइज मेंटली और फिजिकली इट्स वेरी हेल्पफुल। जब एक चीज़ बहुत हमारे को स्पेशली हमारे को कुछ करके मिल रहा है, तो वो चीज़ हम दूसरे के सुनने पे हम वो आगे हम मतलब कि वो ब्रेक्स नहीं करना चाहते थे। हम वो जो हम लोग ने अभी तक करके आया था वो हम वही जगह में छोड़ना नहीं चाहते थे। वो सुन के मतलब कि जो क्रिटिसिज्म हमारे को सुनने मिलता है, क्योंकि जब हम ये सब कर रहे, तो हमारा सब जब हम हमारा फिजिकली और मेंटली हम जब स्ट्रांग होते हैं, हमारा मेडिटेशन कंसंट्रेशन के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो ये सब चीज़ फ़ायदा भी देखना चाहिए ना, हमारे को बुराई में देख के पीछे नहीं हटना था। तो एट द फर्स्ट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत सारे लाइक हम ये चीज़ जब हम नया चीज़ कुछ करते हैं लाइक साइकिलिंग विद आउटफिट्स, ये भी बहुत मतलब कि बुरा क्रिटिसिज्म सुनना मिलता है। हम
आउटफिट लगा के वो नहीं कर सकते, बट वाइल वेयरिंग हम रोप्स के साथ साइकिल चलाएंगे तो इट्स वेरी रिस्की, मतलब कि वाइल मतलब कि अपना साइकिल में यूनिफॉर्म होता है, अपना रूल्स होता है। जब हम रूल्स एक मतलब कि एक चीज़ को देख के हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो मतलब कि जो क्रिटिसिज्म जो सुनाएंगे, मतलब कि इट्स रेगुलर लाइक और कमेंट, तो ये अभी तक चलते आए हैं पहले से, अभी तक बोलते हैं। कुछ आगे अच्छा कर रहा होगा अभी कमेंट होता है, तो ये चीज़ वगैरह को ज़्यादा सुन के हमारे को खुद को अपना प्रैक्टिस और खुद के ऊपर क्या हो रहा है वो सोच के आगे बढ़ना चाहिए। मतलब कि वी डोंट हैव टू थिंक मोर, कि पीछे का जो बोलते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, एक फैंटास्टिक the way you are treating yourself and the philosophy that you actually pursue is extremely strong, and that is making you strong and deliver the same thing for the benefit of people in the society at large. I think that's a very, very nice practice that we have to learn from you. The other thing is, in our society, there are several limits, as I mentioned earlier also. When you go out to communities and try to help them, which is part of your work, there are strong ingrained societal norms, ठीक है, बट जब आप डील करते हैं उनसे, आप किस तरह उनको कन्विंस कर सकते हैं, किस तरह आप उनको बोल सकते हैं कि नारी शक्ति को आदर करना चाहिए, उसका रिकग्निशन देना चाहिए और एजुकेशन देना चाहिए, और एक स्त्री पुरुष समानता की ओर हमारा प्रगतिशील जो है उनके जो सोच है वो आगे बढ़ना चाहिए, और ये सब मुद्दों को आप कैसे टच करते हैं व्हेन यू गो आउटसाइड योर ननरी और व्हेन यू स्पीक टू पीपल हु आर नॉट नन्स एंड जनरल सोसाइटी में आप कैसे कन्विंस करते हैं? एट द फर्स्ट जब हम एक कम्युनिटी से बात करना जा रहे हो तो हमें बहुत प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे क्या थॉट सेम नहीं होता है। जैसे हम सोच के गए थे वो लोग भी वो नहीं सोच रहे होंगे जैसा। ऐसा होता है ना, कभी हम कुछ काम पॉजिटिवली कर रहा होगा, अभी कभी उनका सोच में लेने का चीज़ कभी नेगेटिव हो जाता है। सो जब हम हम सबसे ज़्यादा पहले जब साइकिल यात्रा में हम ज़्यादा बात होता है, हम जब कम्युनिटी से मिलते हैं तो उनके वहाँ पर क्वेश्चंस मार्क किए होते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। सो तब हम ये मतलब कि हम उनके साथ कनेक्ट कैसे होता है कि हम एज ए नन होता है ना, हम कुछ कर पा रहे हैं तो वी आर कहते तुम लोग भी कर सकते हैं, हम ये बोलना चाहते हैं। मतलब कि हम सीधा जाके वहीं आगे बैठ के ऐसा करना चाहिए बोलेंगे तो उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जब हम एक साइकिल पे हम दिन भर साइकिल चला रहे होते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं तो हम उनके साथ जब मतलब कि दे कम्स सम टाइम होता है ना, वो लोग बहुत चीज़ लेके आते हैं, लाइक दे ऑफर वाटर्स, दे ऑफर वेजिटेबल्स। जब वो लोग ऑफर कर रहे होते तो उनके पास ऑफ कोर्स एक क्वेश्चंस होता है हमारे, वो लोग एक क्वेश्चन लेके आ रहा होते हैं। जब हम मतलब कि सीधा हम जाके ये नहीं बोल सकते कि हाउ इम्पोर्टेंट द ह्यूमन्स, हाउ इम्पोर्टेंट द इन्वायरमेंट इज़। हमें पहले उनके साथ मतलब कि पहले हाई कैसे हो, हम ये है, मतलब कि थोड़ा छोटा मोटा बात के साथ हम कन्विंस करते हैं। कभी ये भी हो जाते हैं कि उनके दिमाग में मतलब कि दे आर फ्रॉम चाइना, लाइक हम आउटफिट में होते हैं तो ये लोग बाहर क्या मिलो। फिर कभी बहुत सारे लड़की आते हैं तो वो लोग भी कभी ये भी बोलते हैं कि हमारे को ये लोग बाहर लोग क्या में है, इनसे बात नहीं करना चाहिए। उनका पेरेंट्स कभी ये भी सिखाते हैं मतलब कि ये लोग बाहर क्या में तो इनके साथ बात नहीं करना चाहिए। जैसा हम आगे सीधा जाके ये नहीं बोलना चाहते, इसलिए हम जब स्टार्टिंग में जब पदयात्रा या साइकिल यात्रा कर रहे तो हम जब रेस्ट करते तो हम आराम से मतलब कि उनके साथ घुल मिल के बात करके मतलब कि हम कनेक्ट होना चाहते हैं। मतलब कि सीधा हम जाके मतलब हाउ इम्पोर्टेंट द ह्यूमन इज़, हाउ इम्पोर्टेंट द इन्वायरमेंट, ऐसा जब बोलने जाए तो वो लोग डर जाते हैं। मतलब कि उनको पहले से कभी कोई पेरेंट्स तो ऐसा बोलते हैं कि दे आर चाइनीज़, उनके साथ बात नहीं करना चाहिए, दे आर फ्रॉम आउट द कंट्री, ये सब बात मतलब कि होता है। पर कभी ये भी होता है कि जब हम एक अच्छा मैसेज दे रहा होगा कभी उनके दिमाग में कभी नेगेटिव ले सकते हैं। कभी ये बहुत बार हुआ है, इसलिए हम मीडिया पे थ्रू, इसलिए हम पहले उनके गांव का हर स्कूल के बारे में जान के हम बात करते हैं। Wow, that is fantastic. I think you have given us a very important lesson as to how we understand
the social, cultural context of the village or the people that we're going to help. How do we understand that first and then get to the level of those people and then provide the solution? That's a fantastic approach that you have taken up. The second thing that you have mentioned so well is about the soft skill and the social skills. The soft skill and the social skill of connecting with people around you, the communities around you, is amazing. So therefore, my question is, do you have any special courses on soft skills and social skills which are taught within the monastery? Or do you have some teachers coming from outside and teaching inside the nunnery? Is that, does that happen? No, we are like ऐसा होता है ना, जब हम क्लास हमारा होता है, जब इंग्लिश क्लास होता है तो जो बाहर से होता है इंग्लिश क्लास के लिए, जब हम अपना जब इमोशंस और ये बात करते हैं तो हमारा जो टीचिंग्स होता है ये सब सेम होता है, तो आई थिंक इट्स नॉर्मल. बट जैसे आपने पूछा, ये दोनों के लिए थोड़ा क्लास ऐसा अलग नहीं होता है. अलग नहीं होता है. Very good, very good. But very interesting that, you know, your teaching, your learning within nunnery covers all these aspects. Therefore, you're able to seamlessly extend your services and help people in the communities as well. So that's a very interesting thing. Another small question that I have, but very important, is how to take. Is it possible for others to take membership in your organization? Membership in as a nun? No, as a nun, of course, you told us that there's a long queue and people are waiting to join. But otherwise, people like us who are from a different profession, in what way we can be members of this very important order, important service to mankind that you are pursuing? How we can help, or how can be part of it a little bit, if we can? Like every year we have different celebration, we have different programs like teachings, patyatras and cycle yatras, all the particularly social activism जो हम हर साल करते हैं, वो सब के लिए हम एक Live to Love organize में हम हर बार upload करते हैं. तो you can come through the Live to Love, you can come through the Kung Fu Nuns, and you can come through all our social networks. And you can connect all this, you know, there's every person who are working for all this Live to Love, Kung Fu Nuns, and all the nuns, all the people who are working, and you can get connect from there. And you can get more knowledge from there, what we are doing. So we can get more connect after that. Sure. So there are opportunities and events that are happening, and we can follow through that. And we get to learn more from your social media communication that you are regularly sharing. So that is also available for people to understand what you're doing. And there is some kind of calendar one can actually look up to and learn from and participate. So thank you very much for that. What I request Professor Prasad is, if he has any question, I think we can take up one question, and after that, I'll come back and see if there is a wrap-up possible. Professor Prasad, quick question, please. Yeah. So here I am integrating a few questions from what you've said. You know, see, I heard the word Naropa. Now I've read about him, but you know, a lot of people don't know about him. The Buddha, everyone knows. Yes. Okay. Now the question I want to ask you is, traditionally, for a lot of us, the Buddhism, yoga, these are all inward looking. You try to make yourself strong internally. You know, of course, there are other activities done, but that is not so much publicized. But you are in a work where you go and meet others. You have to do social activism. So you are in a kind of a profession where it's not just internal work. There's a lot of external work also. Now, can you also connect this to the teachings of Naropa as a distinct, very, very famous face in Buddhism? And also your founder, because you have mentioned that he's seen as a reincarnation of Naropa. Yes. Okay, so I have a feeling that this is dictating some of the philosophy and the values that you come from. So can you touch upon Naropa as well as your founder and tell us how this has made a difference to what you do? For me, like our the Ghamo Rupas, the teachings, and the Naropas, what Naropa teach, the same thing is
जो नारूपा एक टीचिंग छोड़ के गए थे, जो अभी हमारा जो गुरु है, जो गुरु एक टीचिंग लाते हैं, तो वो सेम हो, वो नारूपा ने ऐसा टीचिंग हमारे को छोड़ के गए कि जो हेल्पिंग अदर्स, लाइक जो एजुकेशन होता है ना, जो अपना गुरु एक एजुकेशन जो होते हैं, वो बहुत रिलेटेड विद इन्वायरमेंट, हाउ इन्वायरमेंट द इम्पोर्टेंट इज, हाउ द सेंशियंट बीइंग्स आर इम्पोर्टेंट, फॉर दिस थिंग्स। अब ये मतलब कि नारूपा का जो टीचिंग्स रखे, जो मेन रख के हम अपना गुरु के साथ जुड़ के हम ये सब कर रहे हैं, तो एक हमारा एक ये बहुत बड़ा बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का एक बहुत बड़ा काम है, ब्रांचेस है। लाइक जब हमारा एक बुद्धिस्ट के जो कंपैशन, जो पैशंस होता है, जो विजडम्स होता है, जो वो सब हम मतलब कि ये हम जब एक्शन में करते हैं, तो मतलब कि करने का तरीका सब थोड़ा अलग होता है, पर हमारा एक मीनिंग जो होता है, वी वॉक द टॉक एंड वी यूज आवर कंपैशन टू एक्शन। जैसे हाँ, आपने बोला था कि नारूपा एंड बुद्धा, तब नारूपा का और बुद्धा का टीचिंग कभी भी अलग नहीं है, जो एक ही है, जो करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो हम डिवाइडेड हो जाते हैं, करने का तरीका अलग हो जाता है। इट्स नॉट वेरी डिफरेंट, लाइक नारूपा इज टोटली डिफरेंट एंड बुद्धा इज टोटली, नो, इट्स totally same. The teaching is actually that Dharma philosophy is the one line, but doing like ऐसा होता है ना कि सब एक काम जो करते हैं, काम करने का तरीका अलग होता है, बल्कि मीनिंग एक होता है। ऐसे ही जैसे है अभी जो आप नारूपा एंड बुद्धा की बात कर रहे थे, तो वो लोग कुछ अलग मतलब कि एक ही बुद्धिस्ट के मतलब कि लॉर्ड्स है, दे आर like very great masters, but the teaching is actually the compassion to the action, जो चीज होता है तो वो एक ही होता है, मतलब कि वो चीज Excellent, हमारे मिलते हैं। I think you have responded to the question very well. I think you have drawn upon the fact that the teaching is the same, but the manner in which you implement it and you show your compassion is very different, which people are not able to understand. They have the old, Yeah. the earlier mindset of. So I think you have responded excellently to the question. Thank you. Back to Professor Sudhakar. Thank you very much. Wish we had more time to continue this conversation. What I will do is I will now wait for one question to be asked by the audience. I think somebody has raised the hand. Please go ahead and ask the question, whoever has raised the hand, quickly. Shrikant, can we empower the raised hands? Shweta Anand raised hand. Yes, please go ahead and ask the question, please. Yes, sir. Good evening. My daughter wants to ask a question. Yeah, please put her on the mic. Yes, sir. Yes, Namaste. My name is Kaushiki. I am 10 years old and I want to ask know about young girls training program. Okay, hello. I'm sorry, I forget your name. Kaushiki. Kaushiki, hello. Kaushiki, after the pandemic, हम अपनी ननर्सी से बाहर ज़्यादा नहीं गए थे, पर हम ये साल मतलब कि ये साल के करीब हम और एक सेल्फ डिफेंस रखना चाहते हैं। जब वो हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते, पर एवरी टाइम जब नेक्स्ट टाइम होगा हम अपना लीव टू लव पेज में डालेंगे, तो यू कैन जॉइन देयर। Facebook. Yeah, Facebook, yeah, Leave to Love Facebook at the page. Excellent. Thank you. Thank you very much. We are very proud that she want to join. Oh, okay. Yeah, they could have shown her face as well, but it's okay. Next time, whoever is asking questions should be fearless, like the Jigmes that we have with us. They should show their face and talk to the world. That is the lesson we have learned today. That's very nice. What I will do now is, on one hand, I have this paucity of time, and on the other hand, there are lots of questions, but we need to end it sometime, and therefore we'll have to do it now. It's already close to 9 p.m. and I'm sure you have your own duties which are time bound. And if you're late, there could be some punishment, probably, as you mentioned in the early stages. But it is wonderful. It is quite an amazing act in terms of the practice that you're putting into action. As you have mentioned many times, it is walking the talk, it is putting compassion to action.
It's such a beautiful order. And there are several lessons for organizations, individuals, societies, all of us. To start with, I'm wrapping it up now. So to start with, the beautiful powers that women have within them, the instinct to care is at the top. I think that is, everything is actually emanating from that beautiful point. And they can be their own heroes. They should be self-dependent. They should be very strong. The second thing that is coming from there and building on with tools and techniques and practices like meditation, practices like Kung Fu, is to build yourself. In order to be useful to the society, in order to be useful to the members in your own organization, you need to build yourself first, strengthen yourself so that you are useful to others. That's a very, very big takeaway. And that's what you are an embodiment of building oneself. That is what Kung Fu. Yeah, we are expecting them to come out from there. Exactly. The third thing is breaking the norms. Now, breaking the norms is very important at 3 levels that you have explained. One is at self, at yourself. You know, how difficult it was to move from a normal girl to become a nun. There was a tension, there was a customization and all those things. And it was very difficult in the initial days. So dealing with oneself and trying to come to terms with a new life, that is the biggest challenge. Second is with your family, your own parents or your own grandparents. They will always try to tell you why you are doing this, but you respond to your own inner calling and you say that you would like to be useful to the rest of the society by practicing, by being a Kung Fu nun. So there are powers of love, powers from the loved ones actually that are going to actually stop you, pull you back. But you said that with Kung Fu nuns, you would like to spread that love to a large number of people in the society and not restrict it to only your own family. I think that's how the transformation and the obstacles are working there in play. And the third challenge that you mentioned is about the criticism and some kind of name calling that happens in the community or general society when you go around. When you are extending your services, there is criticism bound to happen because they got used to certain norms and you are breaking those norms in one way or the other, and therefore there is some kind of criticism. So at self level, at family level, and at community level, there are always challenges, and once you overcome those challenges, you have proved to be extremely useful to the society, and that's how you're actually liberating, emancipating, strengthening, empowering not just women, though the focus is women, but the entire society through women. It is getting strengthened. So that's a beautiful lesson that you have given us. If somebody's dharma is helping others, if their order, their practice, their belief, and they walk the talk every time, and that is dharma, and if that dharma is to help others, what else do you need? What other overriding features do you need? I think it is about the purpose of the organization, which is a lesson for us. We run lots of organizations. There are several people who are working from different organizations in technology, in sports, social work, engineering, education, so on and so forth. Everywhere this is applicable. The purpose has to be very clear and strong so that all your actions bear fruit if it is drawn out of that particular purpose. Now, the fourth and very important lesson is that Kung Fu has been adopted into your practice not very long ago, but very recently. It's an organization you mentioned. It began in the range of, say, 2008. Some of the examples that you have given is not long ago. I think it is one kind of disruptive innovation in the sense that there's a lot of attention that is given to the practice apart from strengthening your body, mind, and soul. Your body, mind, and soul are connected through Kung Fu, through meditation, and through the service that you are giving. They're harnessing the powers of all this, and then they are distributed to the others with love and compassion. I think Kung Fu has been an overriding attraction in terms of building oneself, and therefore it is a disruptive innovation. If one has charted out this philosophy of helping others, so disruption has been there through Kung Fu. I think that's a very nice takeaway for all of us. Now,
Our organization, ICFAI, is located in Himachal Pradesh. ICFAI universities are located in some of the parts where you live. We have offices in some of the parts where you probably have some monasteries as well. So ICFAI is there in Baddi, ICFAI is there in Dehradun, ICFAI is there in Jaipur, ICFAI is there in Hyderabad, of course, and ICFAI is there in Hyderabad. Pardon me? We have been in Hyderabad, Yes. For the cycle yatra and path yatra. For We the have- cycle. Yeah, Yes. Yes. both yatras there. We would request you to hold some camps for some of our students. We are waiting to learn from you. We are waiting to rub off that effect of positivity and strength and empowerment through you when you go and conduct a few sessions in our campuses. Wherever it is possible, we would like to request you to do that. We are present in entire Northeast. We are there in Gangtok, we are there in Aizawl, Mizoram. We are there in Shillong and Tura in Meghalaya. We are there in Agartala, Tripura. We are there in Nagaland. We are in Dimapur. So we have 5 locations in Northeast. We have 6 locations in non-Northeast. So we have 11 universities, and most of them are of your age, and they would be highly inspired, and it will be a great opportunity for some of our students on campus to learn from you. We have anyway learned from you through this session. Most of us are thoroughly inspired by your own practices and your own beliefs, and the strength of your philosophy. We are all inspired. I will definitely get back to you and request you to connect with our students wherever it is possible. I must also thank the Live to Love Foundation, the organization, the coordination they have done so beautifully all the while. And it has been not easy to disturb some of the busy people that you have. You have lots of activities, and it has not been easy. So the coordination was fantastic. And I must thank Ditisha and the entire team that has helped us give this wonderful connect with you. Of course, the last point which I mentioned before we all go home is that the people who live by Himalayas, are always undaunted by any kind of challenge. They are not stopped by small adversities, small difficulties here and there. I think they carry mountains of confidence with them. And if we interact with people like you, our students interact with people like you, they will have some effect in terms of, borrowing this positivity, strength, and confidence. So that is the purpose with which I said we should connect, and we should expose them to, sensitize them to some of the concerns that you have on gender equality, empowerment, climate change, rescue operations, social service, so on and so forth. I think that's where we can actually once again meet. So thank you very much, both of you, Jigme Rupa and Jigme Yangchen, for this wonderful time that you have given us. We are ever thankful to you. We will always keep coming back to you and keep learning from you. Okay. Thank you very much for your time. Thank you very much. Namaste. So, ladies and gentlemen, thank you for attending this 49th webinar. This leadership conversation, I'm sure, has been extremely useful for all of you who participated from various cities in this country and also from other countries. We look forward to having your support and participation in the next webinar as well. This is scheduled on 1st of April at 7:30 p.m. We are going to have yet another distinguished guest and the leader who led ISRO, Dr. K. Radhakrishnan. He was the former chairman, and he was the man who led that Mongolian mission. And therefore, we are going to learn some lessons in the journey to Mars. So stay tuned. Join us at 7:30 p.m. on 1st of April. Till then, do take care and keep learning from everyone. I think lessons are there for us, and we need to have the opportunity to look around. Today, we looked at and requested the time from Kung Fu Nuns and learned a lot. We will keep learning. Thank you very much. See you next Friday. Good evening to all of you.